माननीय सदस्यगण, मैं अत्यंत दुख के साथ सभा को 18वीं लोकसभा के हमारे दो पूर्व साथियों के निधन के बारे में सूचित करना चाहता हूं। श्री बसंतराव बलवंतराव चौहान महाराष्ट्र के नांदेड़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से इस लोकसभा के सदस्य थे। वे महाराष्ट्र विधानसभा और महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य भी रहे। श्री चौहान एक शिक्षाविद थे जिन्होंने नायगांव महाराष्ट्र में अनेक शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित की। श्री बसंतराव बलवंतराव चौहान का निधन 70 वर्ष की आयु में 26 अगस्त 2024 को तेलंगाना के गाची बोबली में हुआ। श्री एस.के. नूरुल इस्लाम पश्चिम बंगाल के बसीरहाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 18वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे 15वीं लोकसभा के सदस्य भी रहे। श्री नूरुल इस्लाम ने कृषि संबंधी समिति के सदस्य रूप में कार्य किया। इससे पूर्व पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री एस.के. नूरुल इस्लाम का निधन 60 वर्ष की आयु में 25 सितंबर 2024 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में हुआ। श्री एम लॉरेंस केरल के इडुक्की संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री लॉरेंस ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया। श्री एम लॉरेंस का निधन 95 वर्ष की आयु में 21 सितंबर 2024 को केरल के एरानकुलम में हुआ। श्रीमती एम पार्वती आंध्र प्रदेश के श्रीमती गुरचरण कौर, श्री के नटवर सिंह, श्री सीताराम येचुरी, श्री धर्मपाल सबरवाल, श्री धनेश्वर माझी, डॉक्टर ज्ञान प्रकाश पिलानिया एंड श्री प्रभात कुमार सामंतराय। Srimati Guruchan Kaur passed away on the 4th July 2024. She served as a member of this House representing the state of Punjab from 2001 to 2004. Born on 4th February 1936 at Jaitu in Faridkot district of Punjab, Srimati Guruchan Kaur began her journey as a teacher, shaping young minds with her wisdom and guidance. Over the years, she emerged as an ardent advocate of women's rights and empowerment, championing the cause of gender के सम्मान में कुछ देर मौन रहेगी। ओम शांति। सभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। പാർലമെന്റ് ശൈത്യകാല സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കമിട്ട ആദ്യ ദിനം തന്നെ ഇപ്പോൾ ബഹളത്തെ തുടർന്ന് സഭ നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. ശൈത്യകാല സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കമാകുന്നു. പാർലമെന്റിന്റെ വിലപ്പെട്ട സമയം പാഴാക്കരുത്, സുഗമമായ നടത്തിപ്പിന് സഹകരിക്കണം എന്നൊക്കെ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോഴും ഇപ്പോൾ ലോക്സഭ ഇന്നത്തേക്ക് നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. Cambridge graduate and Indian Foreign Service officer of 1953 batch, Sri Natwar Singh served as a member of the 8th and 12th Lok Sabha. Minister of State holding portfolios of steel, mines and coal, agriculture and external affairs during 1985 to 1989, and as the Minister of External Affairs
from 2004 to 2005. As a career diplomat of repute, he served under Prime Ministership of Sri Jawaharlal Nehru, Sri Lal Bahadur Shastri, Sri Morarji Desai, Srimati Indira Gandhi, and later in public life under Sri P.V. Narasimha Rao and Dr. Manmohan Singh. His stints in London, Islamabad, Warsaw, New York, and Lusaka, Zambia in particular, have been truly worthy of admiration. His contributions in the successful organization of the historic non-aligned movement summit in Delhi remain unmatched to this day. For his unmatched contribution, he was awarded Padma Bhushan in 1984. Sri Natwar Singh Ji embodied the zeal to live and contribute, a prolific writer and chronicler of repute. His life and legacy continue to inspire many in public life. I vividly recollect hosting him on his birthday in May 2023 and having lunch with him at his residence on his birthday this year, the last one he had. Both these occasions are deeply etched in my memory. In the passing away of Sri Natwar Singh, the country has lost a distinguished diplomat, a prolific author, and an outstanding parliamentarian whose contributions will be remembered for years to come. Sri Sitaram Yechuri passed away on the 12th September 2024. He served as a member of this House, representing the state of West Bengal for 2 consecutive terms from 2005 to 2017. Born on August 12, 1952 in Chennai, Tamil Nadu, Sri Yechuri started his political career as a student leader and dedicated his life to the pursuit of social justice, workers' rights, and progressive policies. His unwavering commitment to these ideals resonate deeply with his work, both within and outside the walls of this hallowed chamber. His ability to forge consensus on varied issues and his willingness to engage in constructive dialogue made him a beloved and respected figure in our parliamentary democracy. Members of this august House, irrespective of their party affiliations, held Sri Yechuri in great respect and affection and looked up to him for guidance. Sri Yechuri was elected as General Secretary of the Communist Party of India Marxist in the year 2015, a position he held till his demise. In the passing away of Sri Yechuri, the country has lost an influential leader, a committed socialist, and a distinguished parliamentarian whose contributions will be remembered for years to come. Sri Dharampal Sabharwal passed away on the 21st of September 2024. He served as a member of this august House, representing the state of Punjab from April 2004 to April 2010. Born on the 10th January 1941 in Jalandhar, Punjab, Sri Sabharwal dedicated his life to the service of the nation and the upliftment of weaker sections. Sri Sabharwal began his public journey at the grassroots level and went on to make significant contributions to public life. He served as a municipal councillor in 1972, a member of Punjab Legislative Assembly on 2 occasions, 1977 and 1992, and held several ministerial portfolios തത്സമയമാണ് in the പ്രേക്ഷകർ government of Punjab. കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. പാർലമെന്റിന്റെ ശൈത്യകാല സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കമായിരിക്കുന്നു. പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് ലോക്സഭ 12 മണിവരെ നിർത്തിവെച്ചു. പാർലമെന്റിന്റെ വിലപ്പെട്ട സമയം പാഴാക്കരുതെന്ന് പ്രതിപക്ഷത്തോട് പ്രധാനമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു. വഖഫ് ഉൾപ്പെടെ സുപ്രധാന ബില്ലുകൾ പാസാക്കാനാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ നീക്കം. അതേസമയം അദാനി വിഷയം ഉൾപ്പെടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ ആയുധമാക്കാനാണ് പ്രതിപക്ഷ തീരുമാനം.